channel. I am Tanvi Bhadra, aka Miss Chatterbug. I make videos on travel, fashion, lifestyle and lots more. So if you're new here, subscribe, and if you're already a subscriber, welcome back. I love you, and do not forget to hit that bell icon because you want to watch my videos whenever I upload. As you know from the title, I am gonna be unboxing my first ever pair of Jordans. Now, to be honest, securing a pair of Jordans on the retail price, at least in India, is almost impossible. मतलब भाई भगवान साक्षात उतर के आ जाए या तो हर दुनिया में हिम्मत लगा ली हो, ताकत लगा रही हो कि आपको जॉर्डन्स रिटेल प्राइस पे मिल जाए तो ही आपको मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे. बिकॉज द मोमेंट अ न्यू पेयर इज लॉन्च on the official websites, it is sold out within minutes, because that's how crazy the sneaker culture in India has become, and it's been booming like anything. मैंने ये पैर क्यों लिया, इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ. ओरिजिनली मैंने ये फोटो ऑनलाइन देखा था. आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एंड आई रियली लव द पेयर. ओके, आई रियली फेल इन लव विद द डिजाइन, विद द कलर्स, बिकॉज इट इज चुम्मेश्वरी. That's how much I loved it. So secondly, I went to the site. सोचा कि फटाफट ऑर्डर कर दूंगी, फटाफट जल्दी जल्दी आ जाएगा, ऑर्डर कर देते हैं, पहन लेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल देंगे. बट सोल्ड आउट था. फिर मैंने यूएसए की साइट चेक की, ऑस्ट्रेलिया की साइट पर चेक किया, सोचा वहां पे ऑर्डर कर दूंगी, बिकॉज आई फैमिली देयर, कोई ना कोई लेकर आ जाएगा या कुरियर ही कर देगा तो मिल जाएंगे. अगेन नहीं मिला. अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि किसी रीसेलर्स को ढूंढो, एंड टू माई सरप्राइज आई वॉज गेटिंग इन टू द वर्ल्ड ऑफ स्निकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, and to my surprise there are so many amazing resellers actually in the country who would deliver you authentic shoes. Resellers का सिर्फ एक ही पंगा है कि everybody has a different price. Now you could almost end up paying 50% more, 100% more, or even 300% more, depending on the demand of the shoes you're going to order. After a lot of research, I came across a page called City Kicks India on Instagram. मैंने उनका पेज पूरा scroll किया and I found the shoe that I was looking for. So वहाँ पे थोड़ी सी ऐसे दिल में बल्ले बल्ले हो गया. मैंने बोला चलो ऑर्डर कर देते हैं. I messaged them. The only problem here was it was priced almost double. Yes, double. Now, मतलब पैसा झाड़ पे उग तो रहा नहीं है, पर शूज भी पसंद आ गए. तो ये दुविधा में मैंने सोचा क्या करें, and finally I gave in and मैंने कहा I want this shoes. What kind of lovely सर्विस इज दिस यार. 2 घंटे में कपड़े भी नहीं आते, किसी भी साइट से ऑर्डर कर लो. यार जूते आ रहे हैं, वो भी लिमिटेड एडिशन वाले. भाई साहब क्या ही बात है. मतलब आई गॉट हैप्पी, फुल एक्साइटमेंट. लेकिन मैंने उन्हें बोला चलो कोई बात नहीं, आप अगले दिन डिलीवर करा देना. एंड आई ऑर्डर्ड इट एंड वाज सुपर एक्साइटेड वेटिंग फॉर द शूज. नाउ जस्ट पुटिंग इट आउट. मैंने ये शूज़ खुद खरीदे हैं, वो भी ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे, जो प्राइस उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा हुआ था. बट आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई नो दैट माई शूज़ आर रियली ऑथेंटिक and I got the delivery within like hours, so that makes it good. And second thing कि मुझे जो shoes चाहिए थी, they make it available in like my size, my choice of color and everything. So let's get to the unboxing. So let's do unboxing. Unboxing की सारी सामग्री है मेरे पास. ये रहा कटर एंड आइए देखते हैं. वाओ, ग्रेट पैकिंग. इसके अंदर भी एक बॉक्स है जिसके अंदर आई एम होपिंग ओरिजिनल बॉक्स होगा. सो दिस इज हाउ इट इज पैक्ड, दिस इज हाउ दे सेंट इट टू मी. Here it is. क्या यार, ऐसे कोई अनबॉक्सिंग करता है क्या?
Oh my god, this looks beautiful. I mean, look at that. Wow, they've given me wipes also. Kuch wipes hai to keep your sneakers clean. These are called sneaker wipes. This is how it looks like. Uh, there's a sweet, yeah, Steady Kicks. There's a sweet thank you note from them. Amazing. Oh, another wipe. And they've given me a cute pair of socks. Wow, nice. And now, let me show you this beauty that I fell in love with. Okay, these are called Madder Root. These are women's shoes, and this is how beautiful it looks. It has a lot of different material. It has nubuck leather, it has suede here, and also has a lovely Air Jordan wings logo here, which I love. Also, a Jumpman logo on the tongue right here. Now, why I chose this and why I love this, because the color combination is too beautiful. Like, you can wear it, you can dress it up, you can dress it down और कुछ भी पहन लो यार, ये कलर बहुत अच्छा लगेगा. सिर्फ एक ही डर है कि ये white का black ना हो जाए. I don't know how I'm going to maintain this, but I promise पूरी कोशिश करूँगी. घर आकर सबसे पहले जूतों को साफ करूँगी, अच्छे से रखूँगी और फिर अपने आप पर ध्यान दूँगी to keep them looking this clean and this neat. आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है. But I fell in love with the design, with the simplicity, and with just everything. I mean, this shoe looked perfect to me. I thought ये मेरी vibe है. I'm very sure, and I can pull it off really nicely. So here it is, my first pair of Jordans. So this is my first ever Jordan जो मैंने आप सबके साथ unbox की है, and I'm really happy, really excited कि कब इसको पहनूँ, कब बाहर जाऊँ, बढ़िया सी फोटो खींचूँ और Instagram पे डालूँ. So make sure you follow me on my Instagram and leave some comments if you are also a sneaker lover, a sneaker head, and let's connect in the comments below. I will see you in my next video. Thank you.